Welcome back. The big story today is the judgment by the Supreme Court, the 5-judge bench. In fact, they have ruled that for 6 months there is a hold on the unconstitutional practice of instant talaq, that is triple talaq. And there's news just coming in. Women in Bihar's Araria are up in arms against what the Supreme Court has said today. It's ironic, and these women in fact took to the streets and they say they support the practice of triple talaq. But let's just be very clear over here. Even when a large section of women were fighting against instant talaq in the Supreme Court, there was a section of fundamentalists who had tried to take cover behind women. They had also run a signature campaign to tie and discredit the entire movement against triple talaq. And today, not surprisingly, we are again seeing a group of women who have been put on the forefront, supposedly in favor of the practice of instant talaq. Listen into a few of them. हमें जो कुरान शरीफ में बताया गया है, जो हमारे मुअल्लिमात ने बताया है, हम उसी पे यकीन करेंगे, उसी को मानेंगे। ये जो कोई सरकार आके बोल दे कि नहीं ये नहीं है, ये जायज़ नहीं है, तो इस तरह से हम नहीं मान सकते। जो हमारे कुरान शरीफ में है, हमारे नबी ने बताया है, जो उस चीज़ को हम मानेंगे। No surprise then that some of the leaders, some of the most prominent leaders in Bihar also remain completely non-committal when it comes to the issue of removing, ending, banning triple talaq. We're talking about Lalu Prasad, who when asked about the judgment of the Supreme Court said it doesn't give him any khushi and it doesn't even give him any gum. इसमें ज़्यादा किसी को न खुशी होना चाहिए न दुख होना चाहिए। इस्लामिक कानून में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का अपना सोसाइटी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये सब देखेंगे, हम लोग भी अध्ययन करेंगे तो विस्तार से कमेंट हम लोग देंगे। Well, some people may try, some people may resist, they may want to continue with the practice of triple talaq, but the fact is that it is now history, because a landmark judgment came from the Supreme Court today and it set aside this practice of instantaneous talaq. A 5-judge bench headed by the Chief Justice himself gave a 3-2 decision. The majority decision was against triple talaq. They called the practice unconstitutional. Now, judges Nariman, Kurian and Y.Y. Lalit said that the practice was unconstitutional. The Chief Justice and Justice Abdul Nazir were not in favor of declaring the practice unconstitutional. The court has now given 6 months to the centre to pass a law banning triple talaq. Even if the centre fails to pass this law in time, triple talaq will remain illegal. The court also said that political parties should set their differences aside and help Parliament in passing a law against triple talaq. मैं बहुत दिनों से इसी जजमेंट का इंतज़ार कर रही थी और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस का, हिंदुस्तान की सभी तलाकशुदा पीड़ित महिलाएं और समाज सेवी महिलाएं और अपने भाइयों का की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि हम लोग यही चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये मशवरा दे कि जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट है उसी तरह से मुस्लिम मैरिज एक्ट के एक प्रस्ताव पर चर्चा की जाए. This is not a religious issue. This is a gender justice issue, and all progressive and right-thinking people must welcome this decision. It's a Supreme Court decision. You know, you of course will have the BJP and the Prime Minister trying to tom-tom it, but ultimately this has really nothing to do with either the Prime Minister or the BJP. Here, an aggrieved Muslim woman decided to go to court, and because she felt aggrieved and she was humiliated by this whole practice of triple talaq, Supreme Court took cognizance of it, various people intervened and the Supreme Court decided. So therefore the government really has nothing to do with it. It was not a government petition in the first place. It is not as if government enacted legislation. So, you know, they can
they can scream from the rooftops, but it really doesn't matter. This is a constructive, progressive decision which has been taken by the Supreme Court of India. What's your reaction, Salman sir? What is your reaction? My reaction is that what we hoped will happen has happened. It's a good decision. Right. Sir, how do you see the 3-2 decision, especially when the Chief Justice of India saying that they needed 6-1 time? Chief Justice's opinion was a minority opinion. The Chief Justice himself recognized that at the end when the order was passed, it's the majority that prevails in our system, and therefore the majority has not asked for the matter to go to Parliament. Therefore, what the Chief Justice has said is not any longer of any functional value. सलमान सर, क्या प्रतिक्रिया है कि जो डिसीजन आया है उस पर क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया ये है कि अच्छा फैसला है, अच्छा निर्णय है, बहुत सुलझा हुआ निर्णय है, दूरगामी निर्णय है, और ये निर्णय सिर्फ इतना ही करता है, जो मेजॉरिटी का जजमेंट है, कि जो सच्चाई है, वास्तविकता है, सही इस्लाम है, उसको उजागर करता है, और जो इस्लाम से हटकर जो व्यवस्थाएं बन गई थी इस हमारे देश में या किसी और देश फिर से बाहर कर देना है, ये निर्णय बना है और ये अच्छा निर्णय है। सर, व्यवस्थित कानून बनाने की जो बात कही गई है, जो लेजिस्लेचर के लिए कहा गया, उसको वो सिर्फ चीफ जस्टिस ने कहा था, और उन्होंने खुद माना कि वो जो थे वो उनके सामने एक बहुमत का फैसला है, 3 जजेस का फैसला है, इसलिए उन्होंने जो पार्लियामेंट को भेजने की बात करी है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। सलमान साहब, सीनियर भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी। All right, so you heard all of those reactions coming in from the court. Everyone who was opposing the continuation of instant talaq. But remember, this day belongs to the women who have silently but valiantly continued to fight against this reprehensible practice. And Moshmi, I remember you, especially over the last 6 months, have been in constant touch with these ladies, bringing their voices out. Was there a nervous moment for them in the morning when it seemed that the Chief Justice was actually not in favor of outlawing triple talaq? That's right, Padmaja. We were right here with all these women of steel who have been ostracized, condemned for speaking against triple talaq, and they were really nervous. Those were the nervous moments, and we were right there talking to them. I couldn't dare tell them that maybe triple talaq is not banned, and I could see it, the anxiety on their faces. Today is a big day for you. हाँ जी, आज एक बहुत खुशी का दिन है और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी, और हमारे साथ जितनी भी मेरी जो ख़वातीन जो हैं मेरे साथ हैं, इन सब के लिए बेहद खुशी का दिन है। हम आज के ज़माने की मुस्लिम मॉडर्न महिलाएं ख़वातीन हैं जो हमने स्कूल कॉलेज भी गए और हमने कुरान की मुकम्मल तालीम हासिल करी है। तो कोई अगर ये कहे कि हमें इल्म नहीं है इस चीज़ का, तो हमें मुकम्मल इल्म है इस चीज़ का कि कुरान में कहीं पर भी 3 तलाक एक साथ नहीं है, और आज ये एक हिस्टोरिकल डे है। और आप कुछ कहना चाहती थी और गुनगुनाना भी चाहती थी? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मौलाना सुना दीजिए जो आपने सोचा। तेरे सामने मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं खतावार हूँ, मैं सजावार हूँ, मेरी सजदों में तेरी ही है हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने।
Naturally, it's an emotional moment also for them, Padmaja, and they want to ask some questions. But first, I'll introduce you to Rubina. Rubina's husband has given her triple talaq, and now Rubina thinks that there is a hope because her husband is going to marry again, and she wants to stop that marriage. आज का जो order आया है, उससे आपको उम्मीद जगी है कि शायद आपके 3 बच्चे हैं, आपकी जिंदगी तबाह नहीं होगी। जी हाँ, शादी है आपके शौहर। जी हाँ, अब तो शादी वो नहीं कर सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मतलब फैसला किया बहुत अच्छा, हम सब महिलाओं के लिए खुशी का दिन है। आपको उम्मीद थी कि इस तरह का फैसला आएगा? जी जी, बहुत उम्मीद थी। तो अब क्या करेंगी आप जाके? अब जाके खुशी मनाएंगे, क्या करेंगे? कैसे रोकेंगे उनकी शादी? अब मैं जाके वहाँ बैठ जाऊंगी घर में घुस के, मैं निकलूंगी नहीं अपने बच्चे के हक से, मैं क्योंकि रहूंगी यहाँ। कैसे मैं, जब तलाक नहीं मानी जा रही तो तलाक कैसी? आप डीजीपी तक के पास गई थी, सीएम के पास गई थी, कुछ हुआ था? फिर कुछ नहीं हुआ, सब कहीं मैं 7 महीने से दौड़ दौड़ के मैं थक गई थी, तब फिर मुझे जरीन मैम से मुलाकात हुई। ऋषा, आप क्या कहना चाहती हैं? उन तमाम सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं आप लोग के जहन में, क्या सवाल करना चाह रही थी, आप कहना चाह रही थी? जी, हम ये जो मौलाना लोग गुस्सा रहे हैं, हम लोग का जो फैसला खुशी का दिन आया है, हम लोग 3-4 महीने से लगातार डिबेट कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं 3 तलाक को लेकर, तो इसके लिए वो आज हम लोग का फैसला है, तो बहुत बड़ी चीज है जो आज हम लोग के हक में फैसला आया है, और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। हम ये सवाल मौलाना जी से चाहते हैं कि अब मेरे शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली है, हमको छोड़ के गुस्से में तलाक दे दिया, और मौलाना ने एक शादी भी कर ली है, यही जुलाई में मुझे पता चला। मगर हम ये मौलाना जी से पूछना चाहते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य कहाँ है। हम ये मौलाना से सवाल कर रहे हैं, ये जो गुस्सा आ रहे हैं, अब ये बताइए कि उनके हक में मेरे बेटे का क्या हक होगा, क्या आप दिलाना चाहेंगे? ये बताइए आप आगे बढ़ के। हाजरा बेगम, आप क्या पूछना चाहेंगे? हम ये मौलाना साहब से पूछना चाहेंगे कि जो वो गुस्सा रहे थे, मैंने 1 किलो जलेबी का सवाल किया था, तो ऐसी कोई जलने की गुस्से की बात नहीं है, उनको खुद सोचना चाहिए। मेरे 4 बच्चे हैं, कैसे मैंने बेटी की शादी की, अभी मेरी 1 बेटी है, मैंने उन लोगों को बीकॉम करवाया, सब कुछ करवाया, बड़ी मुश्किल से दिन आया। औरत अगर अभी किसी आदमी के साथ जाए, लोग उसको गलत कह देंगे, आप लोग भी फतवा दे देंगे औरत गलत है। आदमी कपड़ों की तरह औरतों को बदल ले, वो गलत नहीं है। कपड़ों की तरह औरतों को बदलते हैं आदमी। मैम, ये कहना चाह रहे हैं कि एक औरत की, ये हम जितने भी हैं उस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे स्टूडियो में, तो उनसे यही सवाल है मेरा कि एक औरत ही क्यों ब्लेम की जाती है? हरकत मर्द की होती है और बर्दाश्त औरत करती है, बर्दाश्त बच्चा करता है, बर्दाश्त उस औरत की फैमिली करती है, तो ये कहाँ तक सही है? उसके बाद मौलाना साहब फतवा देते हैं वो भी औरत को। और इंसाफ मिलता है? नहीं, इंसाफ तो नहीं मिलता है, कोई वो भी नहीं ना। कि अब देखो, हम लोग कोई गलत काम करते हैं, जरा अच्छा भी करना सोचते तो भी मौलाना साहब उसको गलत कहते हैं, आदमी गलत भी करते हैं तो भी उनको अच्छा कहा जाता है। So Padmaja, you can clearly see this is a silver lining for all these women who have today they feel that they have been redeemed by this judgment. Very interesting that while today there is going to be celebration, everyone needs to also go back and check the legalities, because there has to be a legislation in 6 months, and it's going to be a political tightrope for the center, for the government at this point, beginning today for the next 6 months. Some interesting points, Preeti, and my colleague has been in fact in the Supreme Court today. Preeti, a lot of these women now hope that if they've been wronged in the past, somehow that will be set right after the Supreme Court's verdict. But to begin with, can this be applied retrospectively, today's judgment? Well, no, it cannot be applied retrospectively. From here on, the ban will hold for 6 months and beyond that as well, where the Supreme Court comes in a dramatic development, Padmaja, that we were all privy to, on how that split bench has ruled in favor of striking down triple talaq. You know, a lot of Anusha's with me, Padmaja, and Anusha was inside the courtroom as well, and she's just been going through the order. It's a detailed order. You know, it's going to take some time to go through every nuance of it. But and there are questions, Anusha, that, you know, in our studio, you know, we are going across to these women who, of course, are lauding the fact with what the Supreme Court did today, historic in nature, but a lot of them have already suffered, you know, from the scourge of triple talaq. Now, can this order hold retrospect? It cannot be applied retrospectively, that's very clear.
And you'll have to understand that the Supreme Court has said that the practice of Triple Talaq is bad and unconstitutional. What does that mean? That means that if a man pronounces Triple Talaq to his wife 3 times, it is not a divorce. Now, it is not a codified law in this country as far as Muslims are concerned. So that woman now has a right to approach a court and say that, this man is saying he's divorced me, but this is not the right form of divorce that, that needs to be given. So the remedy still is a court. We do not have a law in place which says that, if you give Triple Talaq, you'll be penalized or there would be a compensation in place. All of those things are not there out, yet for the remedy of these women. So if at all Triple Talaq, this entire battle against Triple Talaq has to reach a full and a logical conclusion, then it has to be the parliament and the legislation which can do that. Women who are, it is a matter of belief and faith, right? If a man believes he has given talaq and a woman does not believe it, they'll take it to the court. But what happens in the meanwhile when the battle is being fought? Can the police do something? Can the other authorities do something? Right now, no, the police cannot do anything. They cannot register a case right now because it's still under the 1937 Act. All the practices are still there. That's really interesting, Padmaja, because let's look at it. Okay, let's even, let's not even look at the Supreme Court ruling. Yes, it's historic in nature. Let's not even look at it. Let's look at the fact that in the next 6 months, the Parliament has to come up with a law in this case. What is it that they can do? Right. Let's go back, 1985. There was a... In fact, Preeti, just a second, I have to interrupt you there because the statement by Amit Shah has just come in. I want to tell our viewers because we have to head into a break at this point. But the BJP president has reacted. We will tell you about it in detail on the other side of this break. But he has basically said that it is the beginning of a new era, एक नए युग की शुरुआत, मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमानपूर्ण एवं समानता के एक नए युग की शुरुआत. It will be a new era where women will finally be given their self-respect back. Much more on the reaction that we are getting from the BJP president and from the government, but that's on the other side of this break. The Supreme Court has put the ball in the government's court, asking it to make a legislation with respect to Triple Talaq within a period of 6 months. The centre has refused to come on record but has said that the verdict is a vindication of its stand. Also, that Triple Talaq is not merely an issue of faith or religion, rather it involves women's rights and their dignity. Remember, this was also the stand of the centre when they had submitted an affidavit on Triple Talaq in the Supreme Court. Meanwhile, the All India Muslim Personal Law Board has said that it welcomes the verdict and hopes that Muslim husbands will follow the court's order. The All India Muslim Personal Law Board will be convening a meeting on the 10th of September. हम बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के लिए स्टे दिया है. बहुत सालों से औरतें पीड़ित थी और कोई भी रिलीजन, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके आधे फीसदी लोग पीड़ित हो. एवरी रिलीजन, एवरी सोशल सिस्टम शुड वर्क फॉर इक्वालिटी. और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कंपैशन अपना दिखाया है और ये ज़रूर होगा कि प्रधानमंत्री जी और सरकार एक कानून ज़रूर लाएंगे. हम लोगों को बहुत दूर जाना है एक सामान्यता पाने के लिए, लेकिन हर कदम आगे एक अच्छा कदम है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा औरतों का हित चाहा और बहुत सारे कदम उठाए इससे पहले जो बड़े बड़े कदम हैं, तो ये ज़रूर करेंगे. देखिए, जहाँ तक फैसले का ताल्लुक़ है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमेशा रिस्पेक्ट करते रहे हैं. अब उन्होंने क्या कहा उसको तो डिटेल में एग्जामिन करने के बाद ही हम कोई राय दे पाएंगे. हमारी मीटिंग हो रही है 10 सितंबर को, वर्किंग कमेटी की मीटिंग भोपाल में, और पूरा जजमेंट को स्टडी करके हम उसमें फ्यूचर की स्ट्रेटजी तय करेंगे. और करोड़ों औरतें जिन्होंने जो इसको कमिट करती है कि नहीं वो डाइवोर्स हो गई, तो उनका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या गौर किया है? उनके इनहेरिटेंस के क्या होगा? उन बच्चों का जो ऐसी डाइवोर्स के बाद पैदा होते हैं, इस पर भी गौर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब हमें देखना पड़ेगा.